Hey there, fellow YouTubers. Today, we've got a steaming hot topic that's sizzling like butter chicken on a tandoor, the great Indian name debate. India versus Bharat. Grab your chai and samosas because this debate is spicier than a Bollywood dance-off, and we're diving in head first. Let's start by digging into the juicy backstory, shall we? India was basically the British saying, hey, let's name this fabulous land. It's like naming your kid and then letting your neighbor take credit for it. Meanwhile, Bharat comes from an epic saga called the Mahabharata. It's a family drama so epic that even the Kardashians would be taking notes. Now, let's meet Team Bharat. These folks argue that Bharat is as Indian as butter chicken and biryani, which is saying something. It's homegrown, baby. Plus, it's all-inclusive, like an Indian wedding where everyone's invited. Bharat has the sentimental value of your grandma's secret spice blend. If Bharat were a movie, it'd be a masala blockbuster. And here's Team India. They're like the die-hard fans at a cricket match, and they argue that India is a global superstar, recognized worldwide like Bollywood. Changing it to Bharat would be like Taylor Swift suddenly deciding to go by Tay-Tay. Chaos, I tell ya. Imagine Queen Elizabeth saying, from now on, call me Lizzie. But wait, there's more. Changing the name. That's like switching your Instagram handle overnight. It's confusing, expensive, and just an all-around hassle. Passports, visas, and maps, oh my. It's as if you woke up one day and decided to change your entire identity. Mr. Smith becomes Mr. Spicy. It's a hot mess. So, where does that leave us? The great Indian name debate is like a never-ending soap opera, full of plot twists and drama. But let's not forget, whether it's India or Bharat, it's the same spicy, diverse, and colorful country we all know and love. It's like choosing between aloo paratha and dosa, different flavors, but both delicious. Thanks for joining us today, fellow spice enthusiasts. If you had as much fun as we did, hit that like button like you're smashing a panada at a Desi birthday party. And, of course, don't forget to subscribe for more hilarious takes on the world's quirkiest debates. Until next time, namaste, adieu, and stay spicy, my friends. पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश। इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है।